Today we have to start the next worksheet of everyday maths, which is about speed, time, and distance. So now, सबसे पहले तो आपको ये बताएंगे what we have. We have a formula. We have a formula, or we have a relation between speed, velocity, time, average speed, और ऐसी ही चीजों के दरमियान. Now, so what is the basic formula? Speed equals to Mashallah, you are so intelligent. Speed equals to distance over time. And average speed equals to total distance divided by total time. This is the formula to calculate speed and average speed. Now, for example, here we have question number 1. And what we have in question number 1, average speed is total distance over total time. Question number 1 here is find the average speed in the most appropriate units for each of the following. A journey of 162 miles which took 3 hours. अब आप देखिए एक चीज, माइल्स के साथ माइल्स पर सेकंड नहीं आता, माइल्स पर मिनट नहीं होगा, माइल्स के साथ आवर्स आएगा. तो मोस्ट अप्रोप्रिएट यूनिट क्या हो जाएंगे? माइल्स पर आवर. So in the first part, if we have to calculate the average speed, so average speed equals to, what is the distance? 162. And what is the time? Hours. 3 5s are 15, 3 4s are 12, 54 miles per hour is part A. क्या बेटा? 162 miles took 3 hours. ठीक हो? Now, in the B part, क्या कहा गया? A 1500 meter race which was won in a time of 2 minutes 54.4 seconds. अब आप देखिए, मीटर के साथ बेटा टाइम का कौन सा यूनिट आएगा? सेकंड आएगा, मीटर पर सेकंड. तो आप सुनिएगा, सबसे पहले तो टाइम को हम कन्वर्ट करवा लेते हैं. टाइम क्या हो जाएगा? 2 मिनट्स को क्या मैं लिख सकता हूँ? 2 मल्टीप्लाई बाय 60 सेकेंड्स हो गया. सेकेंड्स में कन्वर्ट प्लस 54.4. व्हाट इज द रिजल्ट? कैलकुलेट कीजिए. Yes, what is the answer? 174.4. 174.4 seconds is time. 1500 मीटर की रेस है, तो therefore average speed क्या हो गई? Total distance 1500 divided by total time 174.4. क्या आंसर आया बताइएगा? Eight point six meters per second. Any confusion? Hopefully there is no confusion, right? Now, in the C part, a journey of 286 kilometers which took 3 whole 1/4 hours. So average speed will be, total distance is 286 and 3 whole 1/4 hour means 3.25 hours. What is the result? Huh? 88 kilometer per hour. Hopefully there is no confusion in this. Yes or no? Yes. Now, next question.
we have to calculate the distance, and in the next question we have to calculate the time. Start working and do question number 2 and 3. Hurry up. Now students, question number 4. Andy goes running every evening for 45 minutes. If he runs at a speed of 10 miles per hour, how far does he run? तब आप देखिएगा स्पीड क्या है, 60 minutes is 10 miles. ऐसा ही 60 minutes 10 miles per hour. तो बेटा 1 hour is 60 minutes. 1 hour is 60 minutes. So 1 minute is 10 over 60 miles by unitary method. अगर 60 मिनट 10 miles के हैं तो 1 minute कितना हो जाएगा, 10 over 60 miles, right? And 45 minutes क्या हो जाएगा, 10 over 60 multiply by 45. Yes, what is the result? 7.5. 7.5 miles, 7.60 minutes, 10 miles, 1 minute this. अब एक चीज और, वेट, माइल्स और मिनट्स को, ये जो यूनिट्स है आवर्स में ही होना चाहिए. तो एक काम करते हैं, वेट, एक काम करते हैं, 60 मिनट नहीं लिख रहा हूं मैं, इसको मैं ऐसे लिख रहा हूं 1 hour. 1 hour equals to 10 miles. ऐसा ही 1 hour equals to 10 miles. So 45 मिनट्स क्या होता है बच्चों, 45 मिनट्स क्या होता है, कितने आवर्स होता है, 0.75. 45 divided by 60, 45 divided by 60, 0.75 hours. So 0.75 hours equals to 0.75 hours equals to 1 hour. If 10 miles, then 0.75 is 10 multiplied by 0.75. So it will be 7.5 miles. हमें क्या कैलकुलेट करना था, हाउ फार कितना दूर जाएंगे, तो इट इज 7.5 miles. 7.5 miles. अगर आवर्स में करना है तो ऐसे कर लें, मिनट्स में करना है तो जो प्रीवियस अभी करवाया था उस तरीके से, दोनों से रिजल्ट सेम आएगा. Which one? जो question number 5. A cheetah is the fastest animal over short distances. It can travel a speed of 96 km per hour. At this speed, how much ground can a cheetah cover in 30 seconds? ठीक हो गया, डिस्टेंस चाहिए. फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम. ऐसा ही. अब सुनिए, स्पीड कितनी है, 96, टाइम कितना है, 30 सेकेंड्स है. टाइम होना चाहिए टाइम इन आवर्स, बिकॉज द स्पीड इज ऑल्सो इन आवर्स, टाइम इन आवर्स. ठीक है, तो इसको डिवाइड कर दें आप किससे, 60 मल्टीप्लाई बाय 60. 2 बार 60 से डिवाइड किया जाएगा, क्यों, सेकंड से एक बार 60 से डिवाइड हुआ तो मिनट्स में गए, फिर 60 से डिवाइड हुआ तो आवर्स में चले गए. आंसर बताइए. So the final answer is 0.8 kilometer, and we can also call it 800 meters. Is this okay? Question number 7. A car travels 130 miles in 2 hours 40 minutes. What is the average speed? So average speed is total distance 130 divided by total time, and the time is 2 hours 40 minutes. तो सबसे पहले आपने एक काम करना है, 2 hours plus 40 divided by 60 कितना हुआ, 40 divided by 60,
0 point. Okay, so it will be 2.67 hours. So 2.67 hours. Wait, so what is the final answer? 130 divided by 2.67? 48.7. 48.7 miles per hour. Now, students, question number 8. A ferry operates from Plymouth to Roscoff, a distance of 115 miles. A distance of 115 miles. अब देखिए, how long would the journey take in hours? How long would the journey take in hours and minutes if the average speed of the ferry is 19.7 miles per hour? देखिएगा, in the first part, average speed equals to total distance upon total time. What is the average speed? 19.7. How long would the journey? Total time हमें कैलकुलेट करना है. तो अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं, पहले टोटल टाइम इधर लिखा, टोटल डिस्टेंस कितना है 115 डिवाइडेड बाय द एवरेज स्पीड. एवरेज स्पीड इज 19.7. व्हाट इज द रिजल्ट? 115 डिवाइडेड बाय 19. क्या नहीं बेटा, टाइम निकालना है तो एवरेज स्पीड को नीचे ले गए. क्या हो गया? So the result is 5.84. 5.84 राउंड ऑफ करके लिख दिया गया. ठीक है, अब सुनिए, इसने कहा था हाउ लॉन्ग वुड द जर्नी टेक इन आवर्स एंड मिनट्स स्टॉप वर्किंग. अब आप देखिए, ये तो आवर्स हो गए, 5 hours and 0.84 minutes. 0.84 minutes, 0.84, सॉरी एक मिनट रुकिएगा, ये क्या हो गया 5.84 hours. तो अब आप देखिए, अगर 5 hours को अलग कर दिया हमने, 0.84 जो hours है उसको मिनट्स में अगर हम कन्वर्ट करें तो कैसे कन्वर्ट किया जाएगा? मल्टीप्लाई बाय 60. तो बेटा 0.84 मल्टीप्लाई बाय 60, 50.4. कितना हो गया? 50.4 मिनट्स. तो क्या मैं लिख सकता हूं? द टाइम इज 5 hours and 50.4 मिनट्स. हमें टाइम देना था आवर्स एंड मिनट्स में. हमारा आंसर आया 5.84 hours. 5.84 hours. हमने क्या किया? 5 hours अलग किए, 0.84 hours अलग किए, जो डेसिमल में hours थे उसको मल्टीप्लाई बाय 60 करके मिनट्स में कन्वर्ट किया, तो टोटल टाइम आ गया 5 hours 50.4 मिनट्स. बात आ रही है समझ में? आगे देखिएगा. One day the ferry left late. In order to arrive in Roscoff on time, the crossing must take only 5 whole 1/4 hours. Stop working, just look at the board. At what average speed should the ferry travel? We need to calculate the average speed. बेटा average speed का फॉर्मूला क्या है? Total distance upon total time. And what is the total distance? Total distance तो आपको 115 दिया हुआ है. Total time 5 whole 1/4 hours means 5.25 hours. आंसर बताइएगा. 21.9. 21.9 की एवरेज स्पीड आ गई फेरी की कि इस स्पीड पर हमें चलना होगा. और ये क्या है? स्पीड माइल्स पर आवर में स्पीड आपको दी गई. Now, question number 9. Question number 9. I'm also doing this, right? The distance from London to Newcastle is 285 miles. Derek takes 4.5 hours to drive. Calculate the Derek's average speed. So in the first part, what will be the average speed? Total distance. Total distance is 285.
upon total time is 4.5. What is the answer? 63.3 miles per hour. And in the B part, calculate the train's average speed. Average speed is total distance is 285 and the total time is 3 hours 20 minutes. तो बच्चों 3 hours तो 3 hours plus 20 minutes को आपने क्या किया hours में convert किया 20 divided by 60 so it will be 0.33 add कर दिया 3 hours में तो total time क्या आया 3.33 and what is the final answer 85.5 miles per hour. Is this clear? Any confusion? No. बच्चों अब आप देखिए in question number 12 9 o'clock पर two friends set off at 9 o'clock. ठीक हो गया ये पूरी स्टोरी एक दी हुई है राइट अब देखिए स्टोरी के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो जरा पढ़ते हैं 9 o'clock पर इन्होंने चलना स्टार्ट किया देखिएगा बच्चों मैं ऊपर लिख रहा हूं टाइम 9 o'clock पर चलना स्टार्ट किया है सही they walk at a steady rate of 3 whole 1/3 mile per hour until noon 12 बजे तक ठीक हो गया when they stop for lunch for 1 hour 1 बजे तक रुक गए फिर कह रहे हैं then walk the remaining 14 miles नीचे डिस्टेंस लिखा and arrive at the destination at 5 p.m. ऊपर टाइम चल रहा है at 5 p.m. How far did they walk before lunch? Lunch से पहले कितनी देर इन्होंने वॉक की तो पता ये चला कितनी दूर how far did they walk before lunch कितना वॉक किया है इन्होंने लंच से पहले they walk at a steady rate of 3 whole 1/3 means 10/3 miles per hour ऐसा ही है 10/3 miles per hour अब आइए टाइम कितना 9 to 12 कितना टाइम हुआ 10 11 12 3 hours कितना हुआ जनाब 3 hours तो therefore एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या है एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम हमें निकालना है टोटल डिस्टेंस तो हमें निकालना है डिस्टेंस तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा स्पीड कितनी है 10/3 मल्टीप्लाई बाय टाइम कितना है 3 so the distance is 10 miles so the distance is 10 miles right after that in the B part at what average speed did they walk after lunch लंच के बाद इन्होंने किस स्पीड से ट्रेवल किया है तो अब आप देखिए टाइम कितना लंच के बाद एवरेज स्पीड निकाल लिया हमें टोटल डिस्टेंस कितना है 14 अपॉन टोटल टाइम कितना है 5 - 1 4 so 14 divided by 4 is 3.5 miles per hour and after that part C what was their average speed of the whole journey average speed of the whole journey is total distance तो पहला डिस्टेंस क्या था 10 miles और दूसरा डिस्टेंस क्या था 14 miles तो 10 + 14 24 total distance upon total time from 9 to 5 how much from 9 to 5 10 11 12 1 2 3 4 5 8 hours 24 divided by 8 3 miles per hour के अकॉर्डिंगली इन्होंने मूव किया है दिस इज द टोटल एवरेज स्पीड
यस स्टूडेंट्स, सो वर्कशीट 10 कंप्लीट हुई आज हमारी. रिमेनिंग क्वेश्चंस आप लोगों ने वर्किंग करना होंगे एज होमवर्क. इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट क्लास विल स्टार्ट द न्यू वर्कशीट, वर्कशीट 11. देखेंगे उसमें क्या है. फिर सी यू इंशाल्लाह ऑन फ्राइडे. अल्लाह हाफिज.